हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया। फर्स्ट वीडियो एक पार्ट 1 जिसमें हमने कवर किया था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर इनकम और पेमेंट, व्हाट आर द फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. Now we are going to continue the chapter, the same chapter, video part 2. आई होप कि आप लोगों ने लाइक किया होगा वीडियो को, मैटर को एंजॉय किया होगा. इस वीडियो में मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने प्लान डिस्कस किया था 12th में कि किस तरह का वेटेज और किस तरह का हमने स्कोर कैसे प्लान आउट करना है. इस वीडियो में हम डायरेक्ट टू द टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. राइट, इन द फर्स्ट वीडियो we discussed definition of micro and macroeconomics, economy, four factors of production, four sectors of economy. Naturally, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पहले वाले वीडियो का कोई भी लिंक होगा तो हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए. फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. वी विल यूज दीज टर्म्स इन दिस वीडियो. एंड फोर फैक्टर production gives income also in form of rent, wage, interest and profit. We'll use these terms in the coming video. In this video, I mean, four sectors of the economy: household, firm, government and rest of the world or foreign sector. Now we'll continue this chapter. Today our part is part 2, the same chapter. Today we will discuss in this video meaning of circular flow of income. What are the phases of circular flow of income? Circular flow of income in two-sector economy, and differentiate between real flow and money flow. We will discuss these four topics in this video. Let's start. First of all, circular flow of income means what? See, this is our circle. This is our circle, right? First of all, what we do in the economy? Generation of income. Generation of income means we produce goods and services with the help of factors of production. And we have done in the last video, there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. In the first phase, what we do, we generate income. Clear? In the next phase, what we do, we distribute this income. Distribution of income. Distribution of income. Here we produce goods and services with the factors of production. Then when we take factors of production from the household, we make payment to them in form of rent, wages, interest and profit. Okay, here in the first phase, with the help of these four factors: land, labor, capital and entrepreneur, there is generation of income in the form of production of goods and services.
These factors are taken by producer from household. Now, when goods and services are produced, they are there will be distribution of income. Rent is given to landlord, wages is given to capitalist, interest is given to capitalist, and profit is given to entrepreneur. Rent to landlord, wages to laborer, interest to capitalist, and profit to entrepreneur. These income, and we call it factory income, is distributed among these owner factors of production. This is called second phase or distribution of income. When these households get income in form of rent, wage, interest, profit, what will they do with this income? They will spend this income on goods and services. In the third phase, there will be consumption, and we call it disposition. Disposition. Disposition means consumption of goods and services. How they'll consume it? They will spend money on goods and services they will buy from this producer. This will be our third phase. So there are three phases. In the first phase, generation of income. In the second phase, distribution of income. In the third phase, consumption of goods and services, or we call it disposition of goods and services, or expenditure on goods and services. So how will define it? It refers to cycle, means generation of income in the production process. In the first phase, there will be generation of income. Its distribution among the factors of production means in the second phase. This is what second phase. This is what first phase. And finally, its circulation from household to firms means what income is distributed in form of rent, wage, interest, and profit in the second phase that will be spent by household to firms in form of consumption expenditure, right, on goods and services. Bilingually we use in Hindi, I'll discuss. Means देर आर तीन फेजेस हैं. फर्स्ट फेज के अंदर जनरेशन ऑफ इनकम होता है, इनकम को जनरेट करते हैं. फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लेकर के गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है. फिर क्या करते हैं कि जब उसने हाउस होल्ड से फैक्ट्रीज प्रोडक्शन लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लिया, तो फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड को रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में फैक्टर पेमेंट करती है, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम बन गई. अब हाउस होल्ड क्या करता है? इस इनकम को सेकेंड फेज से स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर थर्ड फेज के अंदर. यानी थर्ड फेज मींस किसको बोलेंगे? जब कंजप्शन करता है कौन? हाउस होल्ड. कैसे करेगा? जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी वो उसके लिए पेमेंट करेगा और इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेगा. तो इसलिए देयर आर थ्री फेजेस. फर्स्ट फेज में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है फर्म विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसने हाउस होल्ड से लिए थे. सेकेंड फेज में हाउस होल्ड इनकम रिसीव करता फर्म से, किसके बदले में? जो उसने फैक्टर्स फर्म को दिए थे. और थर्ड फेज में हाउस होल्ड स्पेंड करता है अपना मनी जो उसने फर्म से रिसीव किया था इन फॉर्म रेंट, वेज एंड प्रॉफिट, और वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड कर देता है. ये हो गया हमारा थर्ड फेज. सो देर आर थ्री फेजेस. एंड हाउ डू वी डिफाइन इट? It refers to generation of income in the production process. This is first phase. Distribution among the factors of production, second phase. And its circulation from household to firms in the consumption expenditure on goods and services, this is what third phase. बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत लंबी ये डेफिनेशन है, इसको कैसे हम लोग लर्न करें? तो इसको ब्रेक कर लो. एक ब्रेक यहाँ तक, यानी जनरेशन ऑफ इनकम फर्स्ट फेज, सर्कल बना करके इसको अंडरस्टैंड करना है. दूसरी फेज में डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड ब्रेक कर लो. और थर्ड में क्या किया कि जो यहाँ इनकम जनरेट हो गई थी, इनकम रिसीव हो गई थी हाउस होल्ड को, यानी सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म्स इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ तक भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन फर्स्ट वन. एंड हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए.
कि फेजेस कितने हैं, 3, और ये हमने क्या किया फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, यहां मैंने इसको कलरफुल करके इसको समझने की कोशिश की हमने कि फर्स्ट फेज प्रोडक्शन फेज है जिसमें जनरेशन ऑफ इनकम, सेकंड इनकम फेज है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और थर्ड फेज में डिस्पोजिशन कंजप्शन है कि जो हाउस होल्ड को पेमेंट मिली थी रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में, वह इनकम स्पेंड करती जाती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. राइट, ये था हमारा 3 phases of circular flow of income. Now, next question is circular flow of income in two-sector economy. This is very important question. Circular flow of income in two-sector economy. Let's understand this. See, there are two parties. One is household, and this is what firm. And we know household is the owner of factors of production. Household is owner of factors of production. Owner of factors of production. ये बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए. जो एक्चुअली में कभी कभी हमें ये लगता है कि जो फर्म प्रोड्यूस करती है वो ऑनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होती है क्योंकि वही तो गुड्स प्रोड्यूस करती है. लेकिन अगर किसी भी फर्म के पास अपने सब रिसोर्सेज हों, यानी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, तो सेल आउट किसको करेगा? तो दूसरे हाउस होल्ड के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? जब फर्म ने कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि फर्म के पास पार्शियली अपने फैक्टर है, पार्शियली वो हायर करती है. सपोज कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं फर्म के अंदर, तो फर्म के ओनर तो अकेला करेगा नहीं. मान लो अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो क्या सिर्फ अंबानी की अपनी फैमिली पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज को चला रही है, या उसने बाहर से हायर करके लेबर को, या सब उसकी अपनी लैंड है या उसने हायर की है, या उसके पास जितनी भी कैपिटल है उसकी अपनी है या उसने बैंक से लोन लिया है. एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उसके लिए वो प्रॉफिट लेते हैं. तो दिस इज व्हाट बेसिकली a firm is going to hire or buy the factors of production from the outside, right? So household is said to be owner of factors of production, right? First thing. Now we already discussed this one. Household is owner of factor production, and there are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. What happens first? Household gives these factors of production to the firm. To the firm. What? Land, labor, capital, and entrepreneur. Right? Entrepreneur. And what the firm will do? Firm will get these factors. Firm will produce goods and services with the help of these factors of production. And what the firm will give in return to the household? Firm will provide goods and services. See, this is called outer loop. This one. Here, household gives factors production to the firm, and firm gives goods and services to the household in return of land, labor, capital, entrepreneur. This is called real flow. What we call it? Real flow. Real flow.
what we call it real flow. Outer loop is said to be real flow. Now, if there is monetary system in the economy, there is money in the system, then how will do? Then firm will take factories production from household, and in return, firm will give rent, wage, interest, and profit to the household for its services, land, labor, capital, entrepreneur, right? Now, household gets money in form of rent, wage, interest, profit, and household is also getting goods and services from firm. Now, he will have to pay money to the firm, that is called consumption expenditure. That is called consumption expenditure in the form like this. Consumption expenditure, that is called consumption expenditure, means expenditure on goods and services taken by household from firm, that is called consumption expenditure. And these two lines, that is called inner loop, what we call it inner loop. And this is what we call it basically money flow. What we call it money flow, money flow or nominal flow. Inner loop is said to be money flow, nominal flow. Outer loop is said to be real flow or physical flow, right? When there is no introduction of money in the system, that is called real flow. When there is introduction of money in the system, that is called money flow. Now let's understand it again. There are two sectors in the economy, household and farm. Household gives factor services to the firm in form of land, labor, capital, entrepreneur, and firm gives goods and services to the household in return of land, labor, capital, entrepreneur. This is called real flow or physical flow. Now, and if there is introduction of money in the system, there is monetary system in the economy, then household gives factor services to the firm, and firm gives rent, wage, interest, profit corresponding to land, labor, capital, entrepreneur respectively for their factor services. And now house will make the expenditure on goods and services and make payment to the firm for goods and services, and that is called consumption expenditure, and that is what inner loop, and we call it money flow. हिंदी में इसको समझते हैं, दो सेक्टर्स इकोनॉमी में, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देगी। और ये जो आउटर लूप है, ये बाहर वाला लाइन जो दो देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड ग्रीन, इसको बोलते हैं रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। और यदि सिस्टम के अंदर मनी आ गया है तो क्या करेगी, हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल फर्म को देगा, और फर्म उसके बदले में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड को देगा इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी मनी। और हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म से ली थी उसके बदले में मनी फर्म को देगा, उसको बोलते हैं हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दिस इज व्हाट आवर रियल मॉनेटरी फ्लो। जो इनर लूप है, आप ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अभी हमने डायग्राम से समझा है कि अगर मनी नहीं है, हाउस होल्ड फैक्टर दे और फर्म उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे, उसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। और यदि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म को दे और फर्म उसके बदले में मनी दे तो उसको, और हाउस होल्ड फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मनी दे, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। लेट्स डिफाइन real flow or physical flow. Flow factor services from household to firm, and corresponding firm gives goods and services from household, means factor services from household to firm,
and corresponding the flow of goods and services from firm to household. This is called real flow. Now money flow. मनी फ्लो की अगर हम बात करें तो मनी फ्लो में क्या है, फ्लो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड कैसे कर रहे हैं, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि हाउस होल्ड ने उसको क्या दिया था, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रहा है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदी थी उसके लिए पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, रीड करते हैं दोबारा, फ्लो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड टू firm to household for their factor services and corresponding flow of consumption from household to firms for purchase of goods and services। तो ये दोस्तों आज हमारे 4 क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किया। अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर द new upcoming videos subscribe the channel and share with your friends and share our FB and Instagram page also. Thank you all of you.